Hello, everyone. A very logical day to all of you. And here we are with the explanation of the editorial of September 12th of the Indian Express. So the heading is Right Place and Time. So the reading part contains diplomacy, especially timing matters. India's presidency of the G20 came at a time when the world was undergoing a geopolitical churn. Churn यानी ऐसे गोल गोल घूमना, मतलब कुछ ना कुछ तो निकल के आता है. जैसे कभी सागर मंथन तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा उसके बारे में, तो that is called churning, मंथन. Right? The Russia-Ukraine war had impacted the global economy after 2 years of the COVID-19 pandemic. The economic shock of these twin events had a deep impact on developing and underdeveloped countries. There's a deep impact here. The war came at a time when these countries were just trying to get back on the feet with the post-pandemic economic recovery. ये रहा at a time when ये छोटा सा ये जो पंक्चुएशन है ना, इसका इफेक्ट बहुत होता है. So it came at a time. You say first से ही बोला है, first sentence is the timing matters. And all this happened at a time when after the pandemic or post-pandemic, you can say that these countries were almost trying to come back to the normal, right? As New Delhi took over the presidency in December last year, it seized the opportunity to bring together the large group of about 120 countries that were bearing the brunt of the war. War भी हुआ, pandemic भी हुआ, the wars of Russia, Ukraine, that was affecting the third world countries, the developing countries, and they were bearing the brunt of the war. The Voice of Global South Summit brought the views from these countries, and India promised to place their ideas and concerns on the G20 high table. इंडिया ने ये प्रॉमिस किया कि ऐसा करेंगे. असम्पशन इंडिया की बात सब सुनेंगे. ये उसका मानना था G20 मीटिंग को हेड करने पे. इस पे अगर क्वेश्चन बनेगा, दैट इज इट. Assumption from the first part. India's presidency was preceded and succeeded by that of the other members of the Global South. Indonesia was the 2022 G20 chair. Brazil was going to be next year's chair in 2024, followed by South Africa in 2025. तो साउथ के तो हैं जो कि दे विल बी द चेयर. हमने ये चेयर एज ऑटोनॉमी हमने उस दिन देखा था एक और एडिटोरियल में. The figure of speech that we use. So the fact that for 4 successive years, members of the Global South are chaining the G20 offered another opportunity. And then India moved the proposal to invite the African Union as a 21st member of the grouping, including 55 countries in all. The AU comprises almost half of the Global South. This was in sync with New Delhi's outreach to Africa since 2008. In 2015, India hosted the India Africa Forum Summit, which was attended by 40 leaders from the African continent. In the last few years, India has committed more diplomatic resources towards. मतलब ये सब क्या है कि इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज के लिए क्या क्या किया है. नाउ इट इज लाइक रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ अफ्रीका देयर. It has announced 18 new embassies, which will take the number from 39 to 47 in the continent. The proposal had important backers in the US, France, and China. An almost bipartisan consensus emerged across the geopolitical AL. Bipartisan consensus मतलब दो groups almost बन गए. So the timing was apt when India proposed that African Union should be part of the G20 as part of the Global South push to make the group more representative. Both the moves of the Voice of the Global South and the inclusion of AU were mutually reinforcing. दोनों काम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, रीइंफोर्स कर रहे थे एक दूसरे को, and they helped India to craft a diplomatically nuanced language on the Russia-Ukraine war in the joint communique, the New Delhi G20 leaders declaration. Both warring parties in the G20, the G7-led Western grouping, and the Russia-China bloc
एक्नॉलेज द कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, दोनों पार्टीज ने कर लिया। क्यों? क्योंकि ये इसने बड़ा डिप्लोमेटिकली नुआंस्ड लैंग्वेज यूज किया न्यू दिल्ली ने। इट बिकेम द की फल्क्रम and the diplomatic outcome was clear with the entry of the African Union, lending weight to the 7 paragraphs on the Ukraine conflict. ध्यान से आप पढ़ोगे ना तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, उसने कैसी लैंग्वेज यूज की, कैसे बात करी उसने रशिया यूक्रेन वॉर पर, कैसे अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया इसमें G20 समिट में एज अ ग्रुपिंग, एंड देन हाउ द अदर्स reacted or how they were influenced, and what was the diplomatic outcome. Kya hoga? It lended weight to the 7 paragraphs on the Ukraine conflict. They captured not just the impact in terms of the economic consequences, but also the political fallout when a powerful country invades a smaller neighbor. India's presidency achieved consensus for the joint communique with its careful combination of the right diplomatic timing and wide strategic vision. डिप्लोमेटिक टाइमिंग, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, सबसे पहले से सेंटेंस से ही ऑथर ने कहा है टाइमिंग मैटर्स अ लॉट। इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि हम जब अपने टेस्ट में स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो टाइमिंग किस तरीके से करते हैं कैलकुलेट। Not a very difficult passage to understand if you are able to relate to it. Main ideas: amplifying the voice of the global south, inclusion of African Union were timely and mutually reinforcing moves by India at G20. उसने ये काम अच्छे किए, ये काम सही किया, ये काम हुआ। Not very difficult questions you will be able to answer. Conclusions from the first, assumptions from the second, inference from the last paragraph. Easy, set, go. Get set and go. Tone and style, the malicious tone. Malicious. Malice is hatred. Malice is like something disgusting. ऐसे कुछ ना caustic जैसा हो सकता है, offensive हो सकता है, malice डिस्ट्रस्ट हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो किसी को चोट पहुंचाएगी, ऐसा टोन। रॉन्गफुल, ठीक है। अग्रेसिव हो सकता है, देख कैसे करते हैं अभी हम काम, अग्रेसिव एकदम ना, यू रोल अप द स्लीव्स, लड़ने के लिए तैयार। फाउंड इन द गॉसिप आर्टिकल्स, उस सेलिब्रिटी ने ऐसा किया था, if I were in her place, I would not do this. This doesn't look good on such a celebrity. ऐसा काम. Gossip. I don't know how to gossip. ऐसा gossip columns जब होंगे किसी gossip magazine में, malicious tone हो सकता है। कोई एक सेलिब्रिटी अपने किसी दूसरी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ, पहले ऐसा बहुत होता था, अभी तो सब अपने अपने हिसाब से होता है। आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट यूजली रीड दीज आर्टिकल्स एट ऑल, डोंट गेट। कुछ गॉसिप आर्टिकल्स में आ सकते हैं, गॉसिपिंग में बोल सकते हैं लोग, क्योंकि यही होता है, ट्राई टू हर्ट समवन इमोशनली एंड इट कैन ruin someone's reputation, ये भी हो सकता है। तभी वो मेलिशियस टोन है, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, किसी के बारे में ऑफेंसिव बोलना। therefore I said कि ऑफेंसिव कैन बी देयर, कॉस्टिक कैन बी देयर, हर्टिंग, बिटर, बाइटिंग, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं हमारे पास। एसर्बिक हो सकता है, वो भी मेलिशियस टोन में इंक्लूड होगा। सो यू हैव मेनी वर्ड्स लाइक दिस विच वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर क्लासेस: एसर्बिक, acidic, caustic, pungent, biting, bitter, hurting, malicious. Don't get upset if you're not invited. ठीक है, ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम नॉट इनवाइटिंग यू, तो ऐसे कोई डायरेक्टली मुंह पे बोल देगा आई एम नॉट इनवाइटिंग यू, सो डोंट गेट अपसेट। बुरा लगेगा, हमें चोट लगेगी। हाँ, दैट इज इट। यू आर नॉट नियरली एज इंपॉर्टेंट एज यू थिंक यू आर यू? इसके अगर मैंने आयु भी लिख लिया, उससे भी वो पर्सन परेशान हो जाएगा, उसे बुरा लगेगा। मतलब तुम्हें क्या लगता है ये डिसीजन, तुम्हें सपोज कोई बोलता है कि डिसीजन, अच्छा मैं तो था नहीं, फिर तुमने डिसीजन कैसे लिया? तो व्हाट कैन यू से? डू यू थिंक यू आर सो इम्पोर्टेंट?
Why should I wait for you? सिंपल. इतना बोलना ही मेलिशियस टोन हो गया ना, लोगों को चोट पहुंची. अच्छा, एकदम बुरा लगेगा हमें, कोई ऐसा बोलेगा कि अच्छा, डू यू थिंक यू आर सो इम्पोर्टेंट दैट आई वेट फॉर यू टू टेक दिस स्मॉल डिसीजन. हो गया, बुरा लग गया हमें. बुरा लग गया मतलब बाइटिंग, wrongful, it is right, गलत लगा, right? So if it is hurting, it can be malicious, right? So I hope you'll understand it, and I hope you are noting down these also. So that's all for today, and thank you for going through all this. And I hope this is going to help you. Yes, I really wish this helps you. And therefore, if you have any ideas, you can definitely message or mail to the institute. Thank you, and stay logical and have a nice day.